Hi everyone. So I hope I'm audible. Just changing the mic. Okay. Hello. Okay. Hi everyone. Okay, so we are going to discuss about some careers, career options. So just say hi in the chat if you're able to hear me. I think my screen. Hello, hi. Okay, so let's discuss about some career options, guys. Now I can see that you are able to hear me. Okay, so how many options we have first of all? Uh, like in specifically in networkings, like we help people to become network security engineer. Okay, one we have is cyber security, cloud security, and then we have in the last DevOps. Okay. So a lot of people ask me like which career option would be good for them. तो कौन सा career option better है? So basically, we are going to discuss those things. Okay, so if you want to, I'll give 10 minutes on each every domain. Okay, so let's first discuss about cyber security. Okay, so अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, ओके तो मुझे क्या करना चाहिए या कैसा 2025 में क्या फ्यूचर है साइबर सिक्योरिटी का? ओके, उसके ऊपर हम बात करते हैं. So when we talk about cyber security, so as you all know, cyber security is growing rapidly, and a lot of big companies are getting IPO of doing IPO or stocks and all. IPO of cyber security is also growing. So the demand of cyber security is increasing. Simple is that. And rest when we talk about cyber security in 2025, so there are many career options. Okay, so you will be able to become a cybersecurity analyst. So the people who actually monitor the cyber attacks. Okay, analyst means जो चेक करते हैं जो attacks हो रहे नहीं हो रहे हैं कंपनी के अंदर वो सब चीजें. So after that we have cyber security engineer, consultant, specialist, architect. Okay, so all these are related to like maybe configuration. See, these are general terms. Company, they give you some task, right? So maybe when it comes to when you join a company who want offensive security, so they will ask you that you should have some penetration testing knowledge. तो penetration दो तरह की simple in simple words I would say there are two type of cyber security. One is offensive cyber security and one is defensive cyber security. Okay, so when it comes to like if I'll show you defensive and offensive cyber security. Okay, so now we have two cyber security. So आपको पहले ये जानना है that you need to understand in which career, like in which offensive security and defensive, which is going to good for me. So in simple words, if you want to become a defensive cyber security expert, then you can try network security because network security is also a part of cyber security. ओके तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव में जाना है, ओके व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव, सो डिफेंसिव इज लाइक यू कैन गेट इनटू नेटवर्क सिक्योरिटी व्हिच आई विल बी गोइंग टू डिस्कस.
But if you want to join red team means the people who are in the offensive. Okay, so offensive has to learn a lot of technologies. Okay, so we have already created some roadmaps. I'll show you the roadmap also, don't worry. Okay, but we are talking about the career options. So in 2025, like definitely the cyber security is going to be in demand. So how we check, कैसे पता चलता है कि कौन सी field, which field is going to be good in terms of knowledge or in terms of growing. Okay, so like if you check cyber security growth global or global cyber security market growth. Okay, there are many websites which are, you can see, right? So there are market research website also that कि market क्या बोल रही है कि क्या होने वाला है. Okay, so Fortune Business Insights, Market and Markets, Root Analysis. So there are a lot of website. So what we will be going to see, like you have to read few of them. So, but yes, this is the overall market. So this is the North America cybersecurity market size. So this is year on year it is growing, and by next 5 6 years it is going to double or triple. So cybersecurity obviously have good future, right? सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया साइबर सिक्योरिटी, तो दो जब जो लोग इंडिया से देख रहे हैं तो भाई इंडिया में क्या होने वाला है. तो ये क्या है ना, ये रिसर्च वाली मार्केट होती हैं. दीज वेबसाइट्स मॉडर्न इंटेलिजेंस, दीज आर वेबसाइट्स हु एक्चुअली डू रिसर्च एनालिटिक्स कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी चीज पे काम हो रहा है, राइट. सो इफ यू चेक हियर, राइट नाउ इंडिया साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज 4.7 billion, and by next 5 years it is going to be more than double. Okay, it is going to be 10 to 11 billion dollar market. ओके, तो जो मेजर प्लेयर है इसके अंदर, ओके, द मेजर प्लेयर हु आर गोइंग टू डील, सो दैट इज पॉल ऑल्टो फायरवॉल्स, जूनिपर नेटवर्क्स, मैककेफे, नॉर्टन एंड क्विक हिल. सो अगेन आई एम सेइंग पॉल ऑल्टो इज अ फायरवॉल, जूनिपर इज अ राउटर स्विचेस एंड फायरवॉल, नॉर्टन, मैककेफे, इन लोगों ने मार्केट अच्छा कैप्चर करना है आगे जाके सिक्योरिटी में, बिकॉज सिक्योरिटी इज समथिंग like Palo Alto is already leading the market in terms of network security and cyber security. So Juniper, McAfee, all these are also, and even the antivirus endpoint security is also doing great. So overall security is going to increase. And this is the global report. सो ग्लोबल रिपोर्ट में भी क्या आ रहा है भाई, अभी जो मार्केट है जो पूरे वर्ल्ड की, राइट नाउ द मार्केट इज अराउंड 2.207 billion dollar, and it is going to be 376. So don't ask me or anyone that what is the future of cybersecurity. Now I have shown you how to check the trends, how to check the market, and according to that you can prepare for your future or you can guide your juniors also. ठीक है. So global cyber security market again, IBM, Proofpoint, Norton, McAfee, lot of companies. And fastest growing market देखो कौन सी है साइबर सिक्योरिटी में. The fastest growing market is Asia Pacific. Okay, and if I, okay, so you can always read about these things if you want to. But this is only one website. I recommend you all that go and read multiple websites, go and check multiple data formats. Okay, then you will able to realize what is going on in the market. So now you can see cyber security ki market. So now how the market, what I talk about market, like a lot of companies are going to invest in cyber security solution. Suppose if I want security in my company, I am going to say cyber security solutions. Then lot of companies are there in the market. ये देखो यहाँ पे मुझे ऐड भी चल रही है, जो लोग गूगल एड्स चला रहे हैं. अब ये कोई, ये देखो चंडीगढ़ में हूं मैं अभी. ओके, आई एम इन चंडीगढ़. सो देर इज अ साइबर टैग समथिंग कंपनी. सो स्मॉल स्मॉल बिग कंपनीज, okay, all they are marketing that they are a cyber security company from very top level security solution to the. So now, so if I'm a technical person, what I'll do, I'll go to Palo Alto, I'll go to Cisco and buy the products. But there are many companies, suppose a software development company, तो उन लोगों को इतना नहीं पता है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या करना है ऑल. सपोज, ओके, तो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट गो टू एनी नॉर्मल कंपनी एंड दे से ओके वी वांट साइबर सिक्योरिटी. So what will happen? The engineers, the company guys are going to give them a project, okay, that we will charge almost 20 lakhs or 50 lakhs or maybe 2 crore.
Okay, and we will give you we will provide you firewalls, we will provide you endpoint security, like they will install Mac Cafe in all the computers. Okay, they will install your all your website off from on premises to the cloud के ऊपर भी फायरवॉल लगा देंगे। तो हर चीज में क्या है, साइबर सिक्योरिटी लगा के आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बेच दिया। ओके, उसी को बोल दिया कि साइबर सिक्योरिटी की मार्केट बढ़ती जा रही है, बिकॉज लॉट ऑफ अटैक्स आर गोइंग टू इंक्रीज, and that's why 2024 market is, it is going to be double triple in the market. Okay, so now if we talk about other technologies, maybe if you talk about maybe networking, or maybe any other, like if you talk about the server market, obviously server market is also going to increase, because lot of new tech servers we need in future. Okay, so let's talk about the career only, not the market now. Okay, so cybersecurity market is almost going to be 2x 3x in future. Okay, next 5 years. तो इससे हमें पता चलता है भाई फ्यूचर तो अच्छा है, राइट? सो नाउ सेकंड ट्रेंड, सो फर्स्ट आई डू मार्केट रिसर्च। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, एंड आफ्टर दैट आई चेक द जॉब सैलरी पैकेजेस। कि भाई मार्केट में मान लो आप में तीन, सपोज यू ऑलरेडी गेटिंग 5 lakhs, ऑलरेडी यू आर गेटिंग 10 lakhs। तो मुझे कैसे पता चलेगा दैट इफ आई एम ऑलरेडी गेटिंग गुड सैलरी ऑफ 10 lakhs सपोज, बट इफ आई वांट टू स्विच इन साइबर सिक्योरिटी, so if I prepare for next 2 years 3 years cyber security courses, if I put all my efforts, so will I be able to make 25 30 lakhs 50 lakhs in cyber security? And for that we have to check the pay scales also. Okay, so or maybe we can go to any job portal like Naukri or anyone, and we can search for cyber security. Okay, or let's say I'm going to become a cyber security engineer, because even if you are on 10 lakhs in networking, Linux or any domain, that you have to show that yes, you cannot be directly CSO, right? You have to start with basic engineer kind of job, that you already have maybe 1 year, 2 year, 3 year experience. Okay. And now I'm looking for that. Suppose if I'm already getting 10 lakhs. So if you're a fresher, you choose 3 to 6 lakhs. देखो फ्रेश एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, फ्रेशर जो कैंडिडेट है ना, whether you do CCNA, CCNP, firewall, whether you do networking, Linux, Windows server, तुम दुनिया के 500 कोर्स कर लो, तुम्हारा पैकेज 3 to 0 to 6 लाख, मतलब जीरो तो नहीं बोलूंगा, मतलब 3 से 5 लाख के बीच में ही लगेगा। तो आप चाहे CCI भी कर लो तब भी 3 4 लाख ही पैकेज लगेगा। ओके, इफ यू आर नॉट फ्रॉम IIT ऑब्वियसली। ओके, तो आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, आप गुड़गांव जाओ, बैंगलोर जाओ, आपको शुरू में 25 30 हजार या 40 हजार मैक्सिमम मिलेगा। तो आप दुनिया के चाहे 500 कोर्सेज कर लो। तो अगर कोई ये बोल रहा है एज ए फ्रेशर आपको 8 लाख दिला देंगे, 10 लाख दिला देंगे, तो वो शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ होता होगा, बट when it comes to networking, cyber security, DevOps, any field, even I have seen in software line also, that if you are average or more than average, you are going to get 3 to 5 or maximum 6 lakhs CTC. Okay, so but yes, it's okay because it's not going to be your lifetime salary. Okay, 1 2 साल अगर 25 30 हजार पे काम करना भी पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या है, राइट? फिर तुम्हें भी तो स्टोरी सुनानी है ना अपने बच्चों को, हमने स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो ठीक है चलेगा। सो 3 to 6 लाख। Okay, so now I'm showing you this is going to be like the basic kind of jobs you would be able to apply. But if I'm already getting suppose 10 lakhs, suppose मेरी network engineer में मेरे already 10 का पैकेज है, तो obviously if I want to get into cyber security, if I prepare for new technologies, I will always look for good salary, right? That's why I'm changing my domain. So I'll look for 15 to 25 lakhs में कौन कौन सी jobs हैं। Now I'm going to see, okay, there is a cyber security engineer, there is a TS security engineer, there is a Deloitte, which is giving 3 to 8 year experience, 10 to 20 lakhs CTC. Okay, now what they are asking. So now if you see, they are asking this CSSP, CH, CCSK certification would be preferred. So basically this job is going to be not offensive, it is more of defensive, because defensive में audit होते हैं। Okay, and it's not a network security also. Okay,
So we have to check. So automate automotive cybersecurity engineer. Okay, so what they're asking, okay, you should have Linux knowledge, you should have cryptography. Okay, so all these things. So this is how you prepare. And senior lead cybersecurity engineer, Northern Trust. तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर अगर देखोगे ना इंडिया मार्केट, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया मार्केट, so they will be asking courses like CH, penetration testing, CYSA. Okay, so the more and more you do, it is going to give this career is going to give you reward. But it is not a very easy like vertical. In cyber security, you have to learn a lot of things, man. इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके घुस जाएगा इस फील्ड में. ओके, सो मेनी पीपल हु रियली वांट टू गेट इनटू दिस, सो they can start watching our maybe they can start watching our demo classes of CH penetration testing. तो ये वीडियोस आप देखो एक बार. ओके, गो एंड वॉच दीज वीडियोस, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट if this career option is good for me or not. Okay, then you can take the decision. So the first thing in 2025, you definitely you should consider cyber security as a career option. तो उसके लिए पढ़ना कैसे है, that now if I talk about career, that how I can get a cyber security job. So that totally, yeah. So in cyber security, see, this is the roadmap what we have created, and it's been. तो हम काफ़ी टाइम से रोड मैप देते हैं कैंडिडेट्स को कि आप ये फॉलो करिए, और काफ़ी अच्छा है ये. ओके, सो आई विल शेयर दिस लिंक ऑल्सो, डोंट वरी. Okay, so this is the roadmap. So now in this roadmap, you need to understand that we have added the Linux also. That आपको Linux आना चाहिए, आपको Windows server आना चाहिए. You should have Windows server knowledge. You should have Linux knowledge. And if you know some firewall, but you can ignore this right now. But like if you are a beginner, I would recommend you should know network basics. Okay, no need to do complete CCNA. So you can say that you can try network plus. तो आप network plus की knowledge है, that's fine. And definitely Linux you should do in depth, that up to RHCSA level. And MCSA, not all concepts, but Active Directory concept should be very good. आपको Active Directory बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. All these things are minimum requirement. Okay, I think this is basic, and no need to do all these three basic courses that you can check on our YouTube channel. आपको मिल जाएंगी. And after that, now you have to seriously focus on your career. So then you can start with certified ethical hacking, which is, and I do recommend, yes, one or two certifications, not too much. ऐसा नहीं आप 50 सर्टिफिकेशन लगा के बैठ गए और आता कुछ नहीं है. Okay, definitely you should always focus on knowledge. But yes, it is always good to have one or two certification in your resume. Because when you say that I'm a certified guy, then it adds a more weightage in your resume. तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है आपके रिज्यूमे का. अगर आप कहते हो मैं सर्टिफाइड हूँ, पर नॉलेज होना चाहिए. बिना नॉलेज के सर्टिफिकेशन कुछ नहीं करेगी भैया. ठीक है. So CH, so now suppose CH version 13 in the market, and if you go and crack the exam, definitely you can highlight in your resume that I'm a certified guy and all. Okay. So CH, then CompTIA, pen test. This is also very good certification. Then OSCP is also good certification. CYSA, there are hundreds of certification, but normally everyone who start their career, they start from very network basic, Linux basic, Active Directory, and then you can start learning cybersecurity courses. So what we have seen, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, lot of many like lot of people, what they do not have network basic knowledge, they do not have a Linux knowledge, they do not have Active Directory knowledge, and they directly join the ethical hacking courses. And what happens, like
maybe they understand CH very well, but when we perform attacks or when we do labs, they lack in basic of networking. में भी कुछ लोगों को सबनेटिंग नहीं आती होती बेसिक, या कुछ लोगों को ओएसआई मॉडल नहीं पता है. इफ यू डोंट नो ओएसआई मॉडल, हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ पैकेट फ्लो इन इंटरनेट और इन ए नेटवर्क. So when you know the packet, okay, when you know everything from basic, then only you will be able to understand the mind of hacker. Because CH आपको क्या बनाता है? Ethical hacking means you will protect your company from attacker. So if you want to protect your company from real hackers, you need to have real hackers knowledge. Okay, real hackers means the people who are black hat. तो वो जो ब्लैक हैकर है उनके जैसी नॉलेज होनी चाहिए, पर काम हमें अच्छा करना है. ओके, दोज आर कॉल्ड व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, बहुत पुरानी टर्म है, 15 साल से सुन रहे हैं हम. ओके. ओके, बट इन मार्केट लाइक एवरीबडी से दैट यस, आई एम ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एथिकल हैकर, और these terms are just general words. Okay, the main field is cyber security. So CompTIA pen test is also very good certification. You should definitely aim for this. तो अभी क्या है, ये CH आपको बहुत नॉलेज देगी. पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसमें एडवांस आ जाता है. OSCP और ज्यादा एडवांस आ जाता है. ओके, इट्स लाइक द टॉप लेवल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, वन ऑफ द टॉप, नॉट ओनली टॉप. सो देन CYSA इज फॉर एनालिस्ट काइंड ऑफ जॉब्स. जो जो ये दिख रही है ना आपको, ये एनालिस्ट, इसके लिए आपको CH और CYSA इज गुड. Okay, but for cyber security maybe CH, CYSA and pen test, all three will work, right? So cyber security consultant, if you want to become CH, CYSA, pen test, CSSP, OSCP, keep doing certifications man. तो ऐसे होता है. अब suppose if I want to get into very top profile like CSO level, ओके, तो CISO काइंड ऑफ जॉब होती है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. 8,000 जॉब्स दिख रही हैं इसमें सीसो में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड इफ यू सी द salaries are like 10 to 15, 15 to 25, because all small companies, startups are also looking for CSO, AVP IT सिक्योरिटी. अब देखो स्टार्टअप में भी जॉब्स होती हैं, पर आई डू नॉट रिकमेंड यू डायरेक्टली विदाउट नॉलेज यू ज्वाइन स्टार्टअप. उनको भी डुबो दोगे नहीं तो. ठीक है, तो गो एंड ज्वाइन सम MNC, वर्क फॉर 1 2 year, एंड इफ यू गेट अ जॉब, if you get a option to join any startup, you can explore your knowledge in that. So Amadeus, it's a good company, by the way. So now you can see that they asking you CSSP kind of knowledge. They asking you this Defender, CrowdStrike. These CrowdStrike, ये क्या है? ये basically tools हैं. इनकी खुद की भी certifications हैं. But this is more of like SOC tools and all. So this is all we already cover in all the courses. Okay, तो ये सब already cover होता है. So let me close this now. Cyber security is one of the career option in 2025. And if you really want to get into cybersecurity, you can follow this roadmap. And I have added a lot of information. Rest, uh, let's talk about further option. So now the second career option is cloud security engineer. ओके, तो मैं अब पुरानी चीजें नहीं बात करूंगा, दैट यू प्रिपेयर फॉर नेटवर्किंग और यू बिकम ए विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर. नो. सो व्हेन यू प्लान, यू शुड ऑलवेज प्लान टॉप नॉच जॉब्स. बिकॉज अगर हम अच्छी चीज के लिए पढ़ेंगे तो बेसिक जॉब्स तो वैसे ही लग जाएंगी. क्यों? राइट. सो इफ यू प्रिपेयर फॉर क्लाउड सिक्योरिटी, मे बी नॉर्मल क्लाउड जॉब्स यू विल इजिली गेट. राइट. सो क्लाउड सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ बूमिंग मार्केट. लेट्स टेस्ट. और मुझे जो सुन रहे हैं, यस नो कुछ तो बोलो. बोरिंग लग रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ. नहीं नहीं यार, मैं पूरा काम करके जाऊंगा. अब किसी को बोरिंग लगे तो नेटफ्लिक्स देखो जाके. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्लाउड सिक्योरिटी मार्केट. व्हाई क्लाउड? नॉट जस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाउड, बिकॉज व्हेन वी से बिकम कि मुझे ना क्लाउड में जाना है, ये ना बातें देखो, इफ यू आर लिटिल बिट टेक्निकल, सो ट्राई टू थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आपको. इवन कई बार हमें कॉल आता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हमें कॉल आता है कोई कैंडिडेट का कि हाँ जी हम तो 10 साल से IT में जॉब कर रहे हैं, आई एम वर्किंग इन IT फ्रॉम लास्ट 10 years,
Okay, tell me what exactly you want to do. I want to do cloud. What is this? तो आप 10 साल से आईटी में हैं, क्लाउड क्या है ना, एक एक जनरल टर्म है, थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको कि मुझे ना क्लाउड में क्या करना है। मुझे क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है, क्लाउड आर्किटेक्ट में जाना है, क्लाउड में जाना है ना। तो ये कोई वर्ड नहीं है, क्लाउड एक एक प्लेटफॉर्म है समझो, है ना। तो आप सोचो ये क्लाउड को हटा दो, ये वाली जॉब्स पहले होती थी नहीं होती थी। सिक्योरिटी इंजीनियर होते थे पहले भी, अभी भी हैं। ठीक है, क्लाउड, अब क्लाउड में जो द पीपल हु आर डूइंग सिक्योरिटी इन अ क्लाउड, दैट आर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। द पीपल हु आर बिल्डिंग, like who are building the infrastructure, the people who manage everything in cloud, those are called architects. The security analyst, the people who monitor all the attacks कि क्या चल रहा है क्लाउड में। okay, so there are some tools and all. तो एनालिस्ट, द एनालिस्ट मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ थिंग्स। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट इज लाइक एवरी कंपनी हैज देयर ओन नेम, बट इट इज द सेम लेवल। Specialist and consultant means a guy who has very good knowledge and now he is consulting his clients, okay, that how to build their infrastructure. SE administrator is also like engineer only who manages. So all these are job position, but normally a few things here and there. But the main purpose of this job is to get the cloud security done. Now, when it cloud security market, okay, or growth, if I talk about cloud security market growth, so this is the website market and markets. तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2023 का है ये, एंड इट इज गोइंग टू, इट्स ग्रोइंग, मतलब एट द एनुअली रेट ऑफ 10% ऐसे करके बढ़ रहा है। तो अलग अलग वेबसाइट आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ देखें अगर, ये देखो जी। सो अभी हम 2024 में, राइट, एंड बाय नेक्स्ट 5 years 2029 इट इज गोइंग एक्सपोनेंशियली। काफी ग्रोथ दिख रही है इसमें भी। और अगर हम देखें यहाँ पे ग्लोबल क्लाउड सिक्योरिटी, सो मोर इज IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, लाइक द पीपल हु डू लॉग इन एंड ऑल। IAM हम बोल देते हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन में ये मार्केट बेसिकली सिक्योरिटी को भी डिवाइड कर दिया है इसमें, राइट। वेयर पीपल आर गोइंग डिजास्टर रिकवरी, लाइक हु डू द बैकअप ऑफ लाइक गूगल ड्राइव एंड ऑल, सो एवरीथिंग। तो यहाँ दिख रहा है आपको यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ऐसे करके। ओके, लेट मी चेक अनदर वेबसाइट। या, सो दिस, सो एवरीवेयर यू कैन सी द ग्रोथ अराउंड 10% 20% के हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है। ओके, सो ये वाली लाइन्स आप पढ़ सकते हो। इट्स गोइंग टू बी $75 billion मार्केट। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि अभी 38 billion in 2023, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ 43 billion in 2024 एंड 156 billion बाय 2032। विद इन 7 8 साल के अंदर, अभी 24 चल रहा है ना, हाँ। So within 7 8 years, it is going to grow from 38 to 156, almost 4 5 more times. तो अगर अभी भी, now understand that whatever you see nowadays, whether it is a mobile apps, ये 4 गुना और हो जाएंगी अगले 7 8 साल में। ठीक है, अभी आप लाइक देर आर millions of apps today, millions of games, millions of websites, millions of AI tools, lot of things, lot of movies, everything is on cloud। तो ये 4 5 गुना बढ़ जाएगा अगले 6 7 साल में, जस्ट इमेजिन। ओ माय गॉड, कि आज मान लो अगर 10 OTT प्लेटफॉर्म है इंडिया में, तो हो सकता है 50 हो जाएंगे अगले अगले कुछ 5 7 8 सालों में। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है, बिकॉज एवरी वन इज अडॉप्टिंग। एंड वाई क्लाउड इज ग्रोइंग, बिकॉज every a normal guy who never used internet is also watching reels, watching Instagram. Okay, because the market of users are also increasing, the internet users are increasing. So why this is happening, why internet users or worldwide internet users,
ठीक है, 67% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टुडे, ऐसे ही लिखा है भी तो यहाँ तो। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो 5.5 बिलियन। तो ऐसे पढ़ पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा पूरा अंदर घुस जाओ, हमें कौन सा मोदी जी को रिपोर्ट देनी है। ठीक है, कि कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है दैट एक्चुअली हो क्यों रहा है, बिकॉज हर चीज का ना एक लॉजिक होता है कि क्यों क्लाउड सिक्योरिटी, क्यों नेटवर्किंग की, क्या साइबर सिक्योरिटी क्यों डिमांड बढ़ती जा रही है। बिकॉज कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। अगर गाड़ियां बिकेंगी तो पेट्रोल चाहिए, है ना। तो समझ लो अगर इंटरनेट हमारा पेट्रोल है, तो अगर इंटरनेट यूज हो रहा है तो बहुत सारी जॉब्स डेफिनेटली मार्केट में हैं, और भी आएंगी। ओके, इट इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे, बट द फैक्ट इज दैट वी नीड टू हैव द सेम नॉलेज व्हाट एक्चुअली company needs. Okay, so when I say I want to get into a cloud security job, okay, so I will look for, there are 9200 jobs, और मैं पैकेज भी देख रहा हूँ कि मुझे, और मैं फ्रेशर को ना ये बोलता हूँ, कुछ मत सोचो मुझे क्या बनना है अभी, है ना। अभी सिंपल ये सोचो कि मुझे आईटी में जॉब करना है पहले, है ना। तो कई बार क्या होता है ना, एक फ्रेशर आता है हमारे पास, हमें कहता है सर क्या करें। वो तो हमें भी नहीं पता आपको क्या करना है, राइट। है फ्रेशर शुड नेवर प्लान हिज करियर राइट नाउ, बिकॉज आईटी सो डिवर्सिफाइड। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आज आपको नेटवर्किंग में जॉब मिल जाए, सपोज यू गॉट अ जॉब इन नेटवर्किंग, आफ्टर 2 years यू कैन मूव इन साइबर सिक्योरिटी, आफ्टर 2 years maybe you move into DevOps. Okay, so you can keep shuffling your domains. It's not because everything is nowadays related to each other. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, यू कैन इजिली गेट इनटू डेवऑप्स, यू कैन देन easily get into DevSecOps. A networking guy also get into DevOps, and after that he can also get into DevSecOps. समझ रहे हो। तो आज की डेट में लिमिटेशंस नहीं है, इट्स देर आर नो लिमिटेशंस। इफ यू रियली वांट, ऑल प्रोफाइल्स, ऑल टेक्नोलॉजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। तो अगर आपको नेटवर्किंग में जॉब मिल रही है वो कर लो। इफ यू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सपोज, so you can start cyber security as your career, and slowly then maybe you can get it, learn the cloud and then DevOps, and then you can also become the DevSecOps engineer. So DevSecOps means everything like development, security, operations. Okay, from cloud security to managing the whole cloud infrastructure with some security tools. तो ये काफी हाइप में चल रहा है, और यही मेरा नेक्स्ट चीज है, दैट इन द फर्स्ट थिंग इज साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर in 2025. You can at least plan, okay, that I want to get into cyber security. Okay, so when you prepare for Linux, when you prepare for Windows Server, and when you prepare for this ethical hacking courses, suppose as a fresher also, if you do not get a job, suppose you get a job as a Linux administrator, so you can keep learning. Maybe next job you will get cyber security role, है ना। तो जॉब, get a job, but don't be like in this zone, I want cyber security job only, else I will not do job. ऐसा नहीं करना है। तो यही गलती नेटवर्किंग वाले भी करते हैं, क्लाउड वाले भी करते हैं, साइबर वाले भी करते हैं, कि बस जो चूज कर लिया कि मुझे उसी में जाना है, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूंगा। नहीं, तुमसे अच्छा पता कौन है बच्चे, द पीपल हु ऑलरेडी हैव सम बेसिक आईटी एक्सपीरियंस, दे आर मोर सक्सेसफुल, इवन विद देयर, even if they don't have good com skills, even they come from very like very small city. Why? Because they already have basic IT knowledge. Now they have experience to show. तो कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, 2 साल एक्सपीरियंस है, और क्या 15,000 सैलरी है, सिर्फ डेस्कटॉप इंजीनियर का काम आता है। अभी इस बंदे को आगे ना बड़ा क्लियर है कि मुझे ना नेटवर्किंग में जाना है, तो हम भी खुश हैं यार, ठीक है। डेस्कटॉप है, ही वॉन्ट्स टू गेट इनटू नेटवर्किंग। देर आर मेनी पीपल सपोज विथ 3 years ऑफ लाइनेक्स एक्सपीरियंस, ही वॉन्ट्स टू गेट इनटू डेवऑप्स। वेरी गुड। some guys who are in the technical what we call windows servers, तो जो 2 साल से 4 साल से विंडोज सर्वर पे काम कर रहे हैं, पीपल हु आर वर्किंग ऑन विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी, दे कम that I'm working in active directory from 4 years, easily they can go into Azure cloud security, because now they already have the windows knowledge, now Microsoft Azure is going to good for them. तो ऐसे समझना पड़ता है।
Okay. So this is the second career option, as I mentioned, guys, cloud security engineer. So when it comes to the roadmap, there are two programs. Okay. So one is AWS, one is Azure, and there are GCP also. तो आपको कुछ ये कोर्स करने होते हैं: AWS Solution Architect, AWS Network Security एंड AWS Network Specialist. तो ये तीन प्रोग्राम आपको करके साइबर सिक्योरिटी में आपको जॉब मिल सकती है। पर अगर आप फ्रेशर हो तो आप कुछ भी कर लो। मैंने क्या बोला था कि आपको जॉब वही 3 to 5 lakhs के पैकेज पे मिलेगी। तो जो जॉब मिलती है आईटी में पहले एंटर कर जाओ। ओके। यू डू नॉट हैव टू बी चूजी दैट आई वांट टू बिकम ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नो। अगर लाइनेक्स की भी जॉब मिल रही है कर लो। ठीक है। एक छः पर पढ़ना मत छोड़ो। कीप लर्निंग साइबर सिक्योरिटी टिल द टाइम यू डू नॉट गेट ए गुड सैलरी एंड साइबर सिक्योरिटी जॉब. So the same goes with Azure 104, 500, 700. So you can plan this as this also cyber security career option. The third thing what I want to discuss today, that is DevSecOps only. तो देखो DevOps तो काफी मार्केट में है। तो DevSecOps क्या है बेसिकली? अभी पता है हमने ना, हम सोचते हैं नेटवर्किंग्स में यार सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आते हैं लोगों के लिए। ठीक है, पता चला हम बैच बनाते हैं, उनको पता ही नहीं है डेवसेकऑप्स क्या है। तो प्रॉब इसी वजह से ये सेशन करने पड़ते हैं कि डेवसेकऑप्स क्या है। ठीक है, तो डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स बेसिकली सिमिलर है। ओके, सो बोथ आर सिमिलर, जस्ट फ्यू डिफरेंसेस. द डेवसेकऑप्स इज लाइक with like automation scripting and with some security. Okay, so that's the thing. So DevSecOps, future growth, okay, or maybe career growth if you check. So you can see सबसे बड़ा मार्केट साइज आज की डेट में जो होगा अगर इन तीनों ऑप्शन में, वो DevSecOps का होगा. बिकॉज राइट नाउ इफ आई शो यू दैट ग्लोबल DevSecOps मार्केट साइज विल बी वैल्यूएट, अभी बहुत छोटा मार्केट है इसका 2023 में. ठीक है, सो इट्स अराउंड 5 billion इन 20 एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 50 billion बाय 2031. सो हर साल ये 31% की ग्रोथ से ग्रो करेगा ये जो है DevSecOps. बिकॉज DevOps इज ऑल्सो गुड, एज आई मेंशन DevOps के ऊपर चेरी ऑन केक. बिकॉज nowadays everybody is teaching DevOps, everybody is taking trainings of DevOps. Even the software developers are learning DevOps, even the network engineers are learning DevOps. तो हर कोई सीख रहा है DevOps, ऐसा नहीं है. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज वेयर वी हैव टू लर्न दोज टेक्नोलॉजीज. ओके, जैसे कि आपने डॉकर सुना होगा, क्यूबरनेटिस सुना होगा, ये सब सुना होगा. तो अब DevSecOps बेसिकली क्या है? द साइबर सिक्योरिटी विद DevOps इज कॉल्ड DevSecOps. द पीपल हु गेट इनटू with the DevOps knowledge, they have the cloud knowledge, plus they have cyber security knowledge. This is the top notch market today if you talk about the market size. So it is everywhere, it is saying it is growing. तो अभी हमने कुछ लेके और है ना यार, अब हम क्या करते हैं, काफी सारे पॉडकास्ट हम कर रहे हैं. ठीक है, और ये बीच में देखो ये DevSecOps इंजीनियर है. ठीक है, आप इनकी वीडियोस देखोगे. सो आकाश राठी, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वी इनवाइट देम एंड शेयर देयर करियर जर्नी. तो अब ये जो है नागराज, ही इज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एंड this guy, he is a DevSecOps engineer. Okay, so now you can at least, because these guys, trust me, they are on very good salaries. They are maybe on 30 lakhs, 40 lakhs in DevOps or more than that. So if you start listening their stories, how you can get into DevOps and DevOps for day in the life of DevOps, ये लोग क्या काम करते हैं, what is Kubernetes, what is like career options. So we have already creating content. Go and watch this. So this will definitely help you to choose the right technology and career option for you. Okay. So we are also coming with some audio podcast also, networking versus cybersecurity versus uh, DevOps और cloud. तो आप जाके देखिए, इनको पता चलेगा आपको. So now this is DevOps. So DevSecOps, as I mentioned, so we have already created a batch.
where we discuss about what is DevSecOps and all. Okay, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं. And represent the security, and the horizontal line represent the DevOps. So the horizontal line, when I was working in a US company, I asked like, are we to the code scanning tool? तो देखो कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है DevSecOps का, that you have to first plan, then code, then build, then test, then release, then deploy, then operate, and then monitor. तो यहाँ पे थ्रेट इंटेलिजेंस ऐड हो जाता है, दैट वी आर गोइंग टू ऑपरेट एंड मॉनिटर दिस ऐप, एग्जांपल्स आर ड्राइव कि इस पे कोई अटैक ना हो जाए, स्पूफिंग ना हो जाए, ठीक है, टेम्परिंग ना हो जाए एक डेटा के ऊपर, राइट. तो इसको एक मॉडल भी कहते थे, मुझे क्या नाम था, स्ट्राइड आई थिंक, या. तो एलिवेशन, हाँ, ये उसी के ऊपर बात हो रही है मेरे ख्याल से, उसी मॉडल पे बात कर रही है, ठीक है. तो ट्रस्ट बाउंड्रीज एंड ऑल, तो ये जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, व्हेन सपोज यू बाय एनीथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ओके, सो देर शुड बी सिक्योर वेबसाइट, राइट, देर शुड बी. सो वेबसाइट पे जब बंदा आता है, ओके, द पीपल हु विजिट वेबसाइट, द यूजर इन्फॉर्मेशन हिट ऑन द एपीआई गेटवे, देन you will enter your login password, then it will go to the database, then from database it will check and give you authentication, and when the authorized user access is given to you, then you go to the virtual machine, then you will be able to access the complete proper database and all. So it's like a proper architecture which you need to study. Okay, that what's happen and all these things, you need to understand the proper workflow, that how the cloud infra work. So DevSecOps, you can see last month we started this batch, but due to, it's not that there is no demand of DevSecOps. It is just people don't know what is going to, like, that how I'm going to learn DevSecOps. So yes, if you are still interested in this program, I highly suggest you all. Okay, so you can contact networkings and show interest. And if we get at least 10 candidates, we do not want 500 guys. अगर हमारे 10 कैंडिडेट भी DevSecOps सीखना चाह रहे हैं, those who actually understand, yes, this is going to be the future, so definitely we will plan the live batch at very good, from very good engineer, and he is going to deliver more than 100 hours of content and all. तो ऐसे करके आप DevSecOps और DevOps भी बैच आ रहा है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रोड मैप. एज आई मेंशन टुडे, networking, cloud, cyber security and all. So let's check about what is coming soon in networkings. तो अगर हम देखें कि अभी क्या कोई नए बैचेस आ रहे हैं and all. Okay, so first of all, this is the live batches list, that which batches are coming soon in networkings. So the first batch I talk about from networking. So networking batch starting from 15th November. ओके, 15th मतलब परसों से. ओके, सो द नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th नवंबर, एंड इट्स अ वीकडे बैच. तो जिन लोगों को नेटवर्किंग में जाना है, ओके, सो दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th नवंबर. तो जिनको लाइव पढ़ना है और लैब्स के साथ पढ़ना है, ओके, सो 15th नवंबर मीन्स डे आफ्टर टुमारो. एंड इफ यू वांट एडमिशन इन दिस लाइव बैच, okay, so then what you should do, you should, the simple method I asked, go to our website and fill the form, simple is that. Okay, I'll share in the chat also. Okay, so I've already shared in the YouTube chat, guys. You can, if you're really interested in 15th, in 2 days we are starting our complete network engineer program. So CCNA से शुरू होगा, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे. Okay, from very basic CCNA to the NRC, which is like CCNP, and ASF firewall is complementary in this batch. तो जो फायरवॉल नॉलेज है वो इसके अंदर, इस बैच के अंदर, बिकॉज ये दिवाली पे प्लान किया था बैच, और अब इसके 2 दिन रह गए. ऑलरेडी 50 students हैव ऑलरेडी enrolled for this program. Okay, so you can join this, and this is 9:30 p.m. and you can fill this form. I have already shared in the chat. Okay, so now the next is, if you want to get into cyber security, so only one demo class has already done. If you want to get into cyber security, so that's 12 number. It's again a weekday batch.
ओके, सो साइबर सिक्योरिटी भी शुरू हो रहा है, द पीपल हु वांट टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो इट्स अगेन वीकडे बैच। ओके, तो या तो आप नेटवर्किंग पढ़ लो, वो भी 9:30 बजे है। और इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी, सो देन यू हैव टू कम एट 9 p.m. IST डेली, एंड दिस बोथ बैचेस विल टेक 6 months। तो ये भी 6 महीने का प्रोग्राम है, 6 months लाइव ट्रेनिंग, एंड इफ यू मिस एनी क्लास यू विल बी गेटिंग वीडियोस। ओके, एंड लैब 100% प्रैक्टिकल कोर्स, एंड 100% you are going to learn from cyber security expert। ठीक है, तो अब ये आ गया है हमारा तो, और सेम सेम नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम एज आई मेंशनड, इट कम्स विद 6 months लाइव ट्रेनिंग प्लस labs, and also videos are given, and this is 15th November 9:30 p.m. Also, cyber security is also starting already, we have done the demo class, and you can check. And now when we talk about cloud security, that is also started. One class has already done, so one class will be given as a video where we have only discussed about like syllabus कि क्या क्या पढ़ाएंगे and all ये सब चीजें होती हैं। तो आप YouTube पे देख सकते हो, नहीं तो when you contact my team they will share you 9th November video that what we have done in this batch. I think this is not for beginner, sorry, this is for, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 ना, बिकॉज यू शुड हैव 104 नॉलेज, तो ये आपके लिए नहीं है। या तो डेवॉप्स पढ़ लेते पहले। सो 11 को हमारा डेवॉप्स शुरू हुआ था, सो दिस डेवॉप्स बैच, सो यू कैन स्टार्ट डेवॉप्स बैच। सो दैट्स आई थिंक डेवऑप्स वाला ना वीकेंड पे होना चाहिए, वीकेंड होना, हाँ नहीं नहीं वीकडे है। सो दिस इज वीकडे ओनली, 11th November, वीकडे बैच। अगेन दिस इज 9 p.m. डेली बैच, आई थिंक इट विल, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इन 4 to 5 months, बिकॉज इट्स ए 100 hour प्लस बैच। तो ये 100 घंटे से ऊपर की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। ओके, इट्स ए वेरी गुड प्रोग्राम फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू डेवऑप्स। So new technologies are coming, like Zscaler is coming at networkings, Kubernetes is coming, F5 LTM GTM ASM combo is coming. Okay, so CCNA one, if you want to learn in हिंदी, तो अगर आपको हिंदी में मजा आता है और आपको हिंदी में समझने हैं कोर्सेज, तो नेटवर्किंग का एक हिंदी बैच भी आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी बैच जो आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 25 से रात को 8 बजे। तो 25 तारीख को बैठता है हमारा मंडे, ये भी वीकडे बैच है। और ये बट टाइमिंग इसका 8 बजे और ये 9:30 है। तो अगर आप ऑफिस से लेट हो जाते हो तो आप ये बैच ज्वाइन करो, इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश। और अगर आप जल्दी 5-6 बजे घर आ जाते हो तो हिंदी बैच ले लो, मज़ा भी आएगा। मतलब हिंदी में ज़्यादा समझ आता है कुछ लोगों को, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो और क्लाउड सिक्योरिटी के लिए फिर क्या करेंगे जो बच्चे क्लाउड सिक्योरिटी में जा रहे हैं? अच्छा, डेटा सेंटर भी आ रहा है, CCNP डेटा सेंटर, हु वांट टू ज्वाइन द डेटा सेंटर। ठीक है, और एक फायरवॉल कॉम्बो भी आ रहा है, पॉलोटो चेक पॉइंट F5 ये सब। तो जो भी बैच आपको लेना है, आप एक बार इस पेज को आके या सिंपल फॉर्म भर के हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर हाल फिलहाल में जो बैच शुरू हुए हैं, जैसे 15 से बैच आ रहा है जो 2 दिन में 1 दिन में शुरू हो रहे हैं, द कोर्सेज विच आर स्टार्टिंग इन 2 days और नेक्स्ट 3 days 5 days, so you can always WhatsApp us, okay, because उसमें क्या है, जल्दी से आप टीम कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं कि लाइव बैचेस, अगर किसी को लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, ठीक है, और उनको कुछ ऐसी चीज चाहिए कि अ, थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग हो, तो हमने क्या करा, इस बार जो मास्टर प्रोग्राम हमने बनाए थे उसके हमने पूरे के पूरे OTT, हमारा एक नया प्लेटफॉर्म आया OTT। तो हमने OTT के अंदर क्या किया है कि जो भी चीज जॉब के लिए चाहिए होती है, हमने वो सारी चीजों के बंडल बना दिए हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, मुझे नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर CCNA CCNP पॉलो अल्टो
जो भी टेक्नोलॉजी थी सारी की सारी, ये 250 घंटे का कंटेंट है इसके अंदर। मतलब अगर आप 2 दिन, मतलब क्या बोलते हैं, 2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी ये 6 महीने में आप कंटेंट पूरा नहीं देख पाओगे, और एक बार में तो समझ नहीं आएगा, दो दो बार भी देखनी पड़ती हैं। पर आपको ये पूरे लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिल रहे हैं, और आप यहाँ पे ना आके ट्रायल भी चेक करते हैं सकते हो इसका, कि कंटेंट कैसा है अंदर से। थोड़ा बहुत ये 2 4 वीडियोस ओपन हो जाएंगी जब आप ट्रायल के ऊपर करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सेल्फ लर्निंग है। और इसके अंदर हमने अब इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी डले हुए हैं, बट और ज़्यादा इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। जो भी बंडल्स हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। तो दैट्स द थिंग। तो ऐसे ही हमने डेवऑप्स का बनाया है, ऐसी फायरवॉल कॉम्बो है पॉलो अल्टो चेक पॉइंट 48, ऐसी हमारे डेवनेट SD-WAN, ऐसी AWS क्लाउड सिक्योरिटी, ऐसी हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। और एक ये जो हम पॉडकास्ट यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उसकी एक सीरीज भी हमने यहाँ पे डाल दी है ये। तो इसमें आप करी नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम देखेंगे क्या आ रहा है, और उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी इंडस्ट्री में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही होंगी, हम उसके ऊपर नई से नई चीज़ें लेके आते रहेंगे, और नई नए कोर्सेज बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे डेटा सेंटर बनना था, किसी को ना डेटा सेंटर में जाना है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो डेटा सेंटर पढ़ेगा, सीसे ने उसने पढ़ा था, मान लो आज से 5 साल पहले, suppose you have done CCNA 5 years back, but you want to get into data center. So what we have done, we have added all the data center, all the ACI videos, but we are also giving CCNA, OSPF, BGP, MPLS, all content to revise, because we understand our student कि उनको क्या नहीं आता होगा। क्योंकि मान लो डेटा सेंटर से क्या है, डेटा center will give them high salary jobs, but at the same time they can revise their CCNA, CCNP, what they have done in the past। तो यानी अब की डेट में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जो, बिकॉज जब हमने ऑल एक्सेस पास बनाया तो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कैंडिडेट्स कि इतने सारी टेक्नोलॉजीज में क्या करूंगा, कैसे पढ़ूंगा, समझ नहीं आ रहा। तो हमने बड़े शॉर्ट कोर्सेज और बड़े क्लियर क्रिस्प विद ऑल टॉपिक नेम। कहीं पहले फीडबैक आया कि कई बार टॉपिक नेम नहीं डाला होता था, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज मैनेज करना टफ हो रहा था। सो दैट्स वे वी हैव एडेड ऑल द टॉपिक्स। नाउ द सेकंड स्टेप वी विल बी एडिंग lot of notes, interview questions, quizzes, everything, which is like all like जैसे आप नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप होती है वैसी। तो इसके अंदर आके आप अपने टेक्नोलॉजीज पढ़ते रहोगे। तो यहाँ पर हमने जो भी बेस्ट हो सकता था, और ये मैं बता रहा हूँ यार, ये एक एक वीडियो अगर आप देखोगे ना, ये हमारे लाइव क्लास की वीडियोस हैं, ऐसा नहीं है कि यूडीमी वाले वीडियोस हैं ये एक एक क्लास के आप टाइमिंग देख लो। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये फायरवॉल कोर्स है, तो अगर आप देखें, ये एक एक वीडियो 2 2 घंटे की वीडियो है। ये देखो, 2 घंटे 32 मिनट, 2 घंटे। तो ये एक एक कोर्स हमारा 40 40 50 50 घंटे का है। पर नॉर्मा भी एडेड है इसके अंदर, और प्रिज्मा भी एडेड होगा। तो इतना इन डेप्थ कंटेंट बहुत मुश्किल है। मतलब जो बेस्ट हमने जो 5 साल में बैचेस ली हैं, उसका जो बेस्ट कंटेंट है, मान लो हमारे पोलोल्टो 40 40 बार हमने पढ़ाया पोलोल्टो, मान लो आज तक, ठीक है, पढ़ाया होगा, हर महीने बैच आता है। तो उसमें जो बेस्ट ट्रेनर था ना हमारा, जो बेस्ट, जो जिसने बैच डिलीवर किया था, जिसने हर बच्चे का फीडबैक बहुत अच्छा था, वो कंटेंट हमने इस OTT प्लेटफॉर्म पे डाला, बिकॉज हमने मेक श्योर किया है कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे प्रीमियम कंटेंट होगा हमारा। तो दैट्स द थिंग। तो अभी हमने इस पर कुछ 17 18% ऑफ चल रहा है। तो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, तो आप उसको आके इसके ऊपर जो भी 1 2 3 वीडियो अगर हैं वो आके आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इस वेबसाइट से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक इट्स बेटर टू कांटेक्ट, ये चैट भी कर सकते हो आप यहाँ से, कि मुझे, क्योंकि मैं बोलता हूँ गाइडेंस ले लेनी चाहिए, और फिर आपको कोई करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में यार CH, देखो CH से शुरू होगा हमारा करियर। जैसे मैंने बताया कि आपका CH हमारा 12 नवंबर से शुरू हो गया। पहले CH होगा, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगा, और फिर आपको हम देंगे CYS से, फिर उसके बाद OSCP आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा साइबर सिक्योरिटी का OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अभी अपलोड हो रहा है। हम इसके अंदर क्या क्या डालने वाले हैं मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर CH OSCP भी डल रहा है, ठीक है, CYS से भी डल रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी डल रहा है,
इसमें मैं सीसीएनए भी डालूंगा अपना। ओके, आई एम गोइंग टू ऐड माय सीसीएनए वीडियोस, आई एम गोइंग टू ऐड विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी वीडियोस, आई एम गोइंग टू ऐड रेड हैट लाइनक्स वीडियोस, एवरीथिंग, ऑल बैचेस ऑफ ethical hacking, cyber security, CYSA, OSCP, Red Hat, CCNA, Windows Server, everything in this 25,000 at this price as of now। तो अगर ये होगा भी तो थोड़ा ऑफर वगैरह तो इतना, मतलब हर चीज होगी। एंड आफ्टर दैट जो भी उसके इंटरव्यू वगैरह वो सब प्लेटफॉर्म रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, तो अगर आप बिगिनर है ना, सपोज यू आर अ बिगिनर, तो आप लाइव बैचेस ही करिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको पहले से काफी कुछ पता है, जैसे आईटी में है या साइबर सिक्योरिटी में बेसिक जॉब कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा रिवाइज करना है चीजें, या उनके पास उनकी जॉब रोटेशन में होती है, उन लोगों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बट अगर आप लोग लाइव कर सकते हो, और हमारे बैचेस सारे 8 बजे रात के, 10 बजे, 9 बजे रात, मोस्टली ऑल आर बैचेस इन द नाइट, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर लाइव बैचेस। ठीक है, तो मैंने लिंक डाल दिया यूट्यूब में, आप फॉर्म फिल करो या व्हाट्सएप करो। ठीक है, तो पर बनाओ, शुरू करो करियर, क्योंकि होता पता क्या है, नवंबर में करोगे नहीं, दिसंबर में नहीं करोगे, फिर दिसंबर में आएगा वो ईयर एंड आ गया, नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ रेजोल्यूशन लेना था, तो पहले ही ले लो। 2 महीने में इतने में तो एक टेक्नोलॉजी पढ़ लोगे, यानी नेक्स्ट ईयर जाओगे तो बिल्कुल फिर ब्लैंक नहीं जाओगे, लगेगा कि पहले चलो मैंने लास्ट के ईयर में कुछ कर लिया था, 2025 में भी कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है, तो ये चीज है कि अभी से पढ़ना शुरू करो, ताकि जैन तक तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि मुझे अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है नॉल। अब कोई डाउट्स हैं किसी के तो पूछ सकते हो यार। आई हैव नॉलेज ऑफ डेवऑप्स एज वेल एज सीसने ऑल्सो एडब्ल्यूएस एज़ोर, टेल मी विच जॉब पोजीशन बेस्ट फॉर मी। सी, हैविंग अ नॉलेज ऑफ डेवऑप्स, और if you already have good knowledge of DevOps, also CCNA, AWS is go for a DevOps job ना। CCNA करके अच्छी बात है, go for DevOps jobs only। Shalab, sir, any best guidance for new fresher pass out students should do these courses? Shalab, see, we recommend students if like if you are a very very like beginner or what we call freshers. So either you choose your career option that I want to get into DevOps, cyber security. Like freshers can also do our programs, no problem in that. Okay, because all the fields are important. But if you are not financially stable, you do not want to take money from your parents, so you can watch our YouTube videos. You can watch like in our previous videos, we have given some free courses, basic free courses, that is free access pass and all. You can check, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जिनको मैंने डाला भी था यार कहीं पे, तो ये रहा। ओके, आई एम शेयरिंग दिस लिंक गाइस। तो जिन लोगों को अभी जॉब नहीं है बिल्कुल भी, जिनके पास 10,000 की भी जॉब नहीं है, मान लो 15 बेसिक जॉब भी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मुझे लगता है आपको कोई, बिकॉज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार दिस इज फॉर द कोर नॉलेज। तो कोर नॉलेज मतलब अगर आपको प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो नेटवर्क इंजीनियर कोर्स करो। इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू क्लाउड सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स इंजीनियर, देन डू आर प्रीमियम कोर्सेस। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, नो नीड टू डू एनीथिंग, बिकॉज आई टोल्ड यू, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सैलरी 25-30 हजार ही लगना है, या 40 लग जाएगा। तुम दुनिया जहान के 500 कोर्स कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा 10 लाख। तो इससे बढ़िया ये है कि बेसिक पहले कोई भी आईटी जॉब लग जाओ, एंड टू गेट अ जॉब यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, बिकॉज आवर गोल, तो हम यही कहते हैं कैंडिडेट को, आप पहले फ्री वाले कोर्सेज करो। उसमें 10-12 कोर्सेज हैं इस प्लान के अंदर। ठीक है, तो इसमें 10 घंटे का एथिकल हैकिंग है, 5-7 घंटे का लाइनक्स है, विंडो सर्वर है, डेवऑप्स है, और एथिकल हैकिंग भी 8-10 घंटे का। तो जो भी जॉब फ्रेशर है ना, मुझे लगता है हमारे फ्री कंटेंट से ही लग जाएगी, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बट आप ऑलरेडी अगर 25-30 ले रहे हो तो आपको कोर डोमेन में जाना पड़ेगा। अगर आप फ्री कंटेंट में रह जाओगे, उसमें इतना इन डेप्थ नहीं होगा कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ठीक है, बाकी देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ जिसको भी पहले फ्री कंटेंट से क्वालिटी, फ्री कोर्सेस,
फॉर फ्रेशर्स। ठीक है जी भाई, अपना काम पूरा। और यार ये जो लिंक भेज देना फ्री कोर्सेज वाले, ये शेयर कर दिया करो अपने कॉलेज में, एचओडीज को, इधर उधर। कुछ तो किसी का भला हो जाए क्या, अब तो तुम्हारी वजह से, है ना? तो यही मैं कह रहा हूँ। ओके गाइज, थैंक यू ऑल। आज ऑडियंस एक्टिव नहीं थी यार, मुझे लग रहा है। आज मैच है ना, मुझे याद आ गया, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। दैट्स वाई। ओके गाइज, बाय बाय।